to know how to write the program. So for writing the program, first you need to define the class in Java. As we are using a object orientation concept, so that we're using how to define the classes. Okay, so for defining the class, we have to use class keyword. So first, let's see how you have to define a class keyword. So we're defining a class, then class name. That is the way of defining a class. Class is a keyword for defining a class. Then class name is demo. Demo is the class name. It is the way of defining a class. Okay, ବୁଝିଲା? ବୁଝିପାରିଲ କେମିତି କ୍ଲାସ ଟା ଡିଫାଇନ୍ ହବ? ମଧୁ सर ବୁଝିହେଲା? आज्ञा सर तमर क्लास टा डिफाइन हला जावा रे प्रोग्राम लिखिबा को हेले प्रथमे क्लास कीवर्ड यूज करिया पड़िबो. आज्ञा सर क्लास नेम देन क्लास कीवर्ड टा हमर यूज करा जीवो फॉर डिफाइनिंग ए क्लास. ओके, यस सर then for writing a program, first you define class. Class name is demo. Then here we define public
static public static void main string args. System.out dot println will show you hello Java. It is the way for defining a class. So what is that class? Class is a keyword for defining a class. It is a access specifier. What is access specifier? We discuss in the latter class. Static means constant. When you find static, there is no need to call function. Then void. Sir, what a return type? Void means it is a return type which Will return nothing. doesn't return any value. Then main is a main method which is entry point program
Stream ArJS is an array which is to pass and receive data command line argument. It is used to pass and receive through the command line argument. Now system That through common line argument. command prompt रे जहाँ भी डाटा दवा user interaction अच्छा सेठी हमें use कमेंट होता ना ओके सर system is a predefined class system dot out a variable of print stream class. Println is a method which is to print line wise used display data in new line. That is the program. Now I give that part as a command as a comment line. Now remember that when you save the file with the class name. So what is the class name? Save that file with that name. okay sir So your class name is demo, then save that file with that name. So there may be in a program, there may be more than one class will be there, but in which class your main method is present, save that file with that name. So my file name is demo, then I save the file as a demo. Suppose I save the file in D drive.
demo dot java. I save the file. The green line are the non-executable part of a program. तमे इतना program लिखिबो ए green line गुड़ाकरे जहाँ mention कराई छे को लिखिबा दरकार नहीं. It is for your information. I have written. It is your program. Now for compiling Java application, open command prompt, colon enter Java C demo.java. We are compiling a Java application. Java C demo.java. Java C is the compiler name. Java demo is for execution. It is showing you hello Java. Okay, it is printing you hello Java. Here I have written Java C, the compiler name. Then for compilation, we are using Java C, only file name dot Java. Then for execution, Java, then file name. That is the way of compiling Java application. Any doubt in the program? Yes, Manoranjan, Madhu. No, sir. Sir, please repeat again. For writing a Java program, first of all, we have Yes, sir. to define the class name. As it is a Yes, sir. object-oriented concept, then Java program will start with the class. Class name Yes, sir. is a keyword for defining a class. Yes, sir. Then class definition, your class name. Okay. Then here we define class demo, public static void main string args. It is called as the main method.
Main method is called as the Yes, sir. entry point of your program. All program execution is starts from a main method. You can say it is called as the engine of your Java application. Okay, the engine of Yes, sir. application is called as the main method. And system.out.println. System is a predefined class. In predefined class, out is a variable, then println is a method. So we are calling here Yes, hello sir. Java. Okay. The public is called as the access. Yes, sir. Okay. Public is called as the access specifier. Main method is always public. Why main method is a public? Because you write the program or modules anywhere. ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ସବୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଲେଖିକି ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାକୁ ଆମେ ମେନ୍ ମେଥଡରେ କଲ୍ କରିପାରିବା। ମେନ୍ ମେଥଡଟା ପବ୍ଲିକ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ସବୁ ସେଠି ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବା। ପବ୍ଲିକ ମାନେ ଏନିବଡି କ୍ୟାନ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ତାପରେ ଆମର ଏଠି ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଷ୍ଟାଟିକ୍। ଷ୍ଟାଟିକ୍ ମିନ୍ସ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। କୌଣସି ମେଥଡକୁ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ତାହେଲେ ସେ ମେଥଡରେ ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ କଲ୍ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। स्टैटिक जदि आम डिफाइन करूचे कौन सी फंक्शन ताकू हमको ऑब्जेक्ट थ्रू रे क्लास ऑब्जेक्ट रे कॉल करी होबनी माने डायरेक्टली मो फंक्शन टा कॉल होबो जदि मो स्टैटिक लिखिबी। void होची रिटर्न टाइम। जेता बेले आमे फंक्शन टा एग्जीक्यूट करिवा से हमको किछि रिटर्न करिवो, किंतु जेहेतु आमे void लिखिवा आमे किछि एक्सपेक्ट करूने जे मेन मेथड हमको किछि रिटर्न वैल्यू रिटर्न करिवो, सेति पे आमे void लिखा होची। main compare दिया जाए as it is a main method, all program is execution starts from here, so we define as a main method. Then string args is an array, तो एटा command line argument, एटा जेंते हमें command line through रे program टा execute कले जेते बेले यूजर कोनोसी वैल्यू command line through हबो ए वैल्यू टा आसी के एटी स्टोर हबो, तो एई वैल्यू एई जगह रो हमें वैल्यू टा को रिट्राइव करि परिबा। System is a predefined class और println है हमको डिस्प्ले करिबो। हमर मन रे क्वेश्चन आसीबो हमें मेन मेथड जगह रे अलगा किछि मेन जगह रे अलगा किछि लिखि परिबा। यस, मेन जगह रे हमें अलगा ना देई परिबा, जेंति कि हमें फंक्शन ना दउछे जेंति मेन रे भी हमें अलगा ना देई परिबा, किंतु हमको जेवीएम रे सेटा डिफाइन करबा को पड़िबो। जेंति कि सपोज तुमको कुहा हो तुम बाबा कहले जे तुम्हें बस स्टैंड जीवो को खोजिवो जार तार माने ग्रीन पैंट थिबो और तार थिबो व्हाइट शर्ट थिबो, तो तुम बस स्टैंड गलो, बस स्टैंड रे जाके तुम सर्च करिवो से लोकटा को, सेतार तुम संग आसीबो से पचारिवो जे तुम काहा को खोजुछो ना मु एमिति गोटे लोक को खोजुछि जे ग्रीन पैंट पिंदी थिबो आ व्हाइट शर्ट पिंदी थिबो, तो से लोक को मु खोजुछि। तो सेमती जेवीएम रे कोन हुए ना हमें मेन मेथड टा को हमें पकाए छी इन्वॉल्व करा जाय छै। जेता बेले हमर प्रोग्राम टा एग्जीक्यूट हबो जेवीएम प्रथमे जाके देखिबो जे मोर मेन मेथड टा कोठी अछि, से प्रथमे मेन मेथड टा को ही खोजिबो। तो मेन मेथड टा को खोजि के तापरे हमर प्रोग्राम टा को से एग्जीक्यूट करिवो। तो मेन जगह रे हमें अलगा भी लिखि परिबा, किंतु एटा डिपेंड करूची कोन हमें जेवीएम रे सेटा हमको चेंज करिया पड़िबो। जेहेतु जेवीएम रे हमें मेन टा को डिफाइन करिचे, तो सेति पई से मेन मेथड को ही आगे खोजिबो। बुझियला ठीक प्रोग्राम? Yes, sir. Yes, sir. Now for defining a method, what are the syntax we have to use for defining a method? For defining a method, first we define
access specifier then return type then function name तापरे हमें फंक्शन नो बॉडी लिखियो एटा होची हमें मेथड डिफाइन करिवा पई एटा होची सिंटैक्स आ गोटे वे केमते डिफाइन हबो function name then bracket function contain the set of instruction to do a specific task एठी हमें parameter use करिबा what is the work of parameter parameter is used to pass and receive the data pass and receive the data method next वे केमते डिफाइन करा हबो मैं विदाउट एक्सेस स्पेसिफायर रे फंक्शन डिफाइन करि परिबो don't require any kind of access specifier next fourth वे केमते डिफाइन करा हबो without access specifier then we define here parameter first example कौन दिखा डिफाइन करा हबो example one ने डिफाइन हबो public void suppose display function एटा function define हैला function of body रहला सेकंड टाइम हमें कौन डिफाइन कराबो फंक्शन public void suppose display function एठी हमें किछि गोटे पैरामीटर नबा suppose मोटे इंटीजर पैरामीटर ने आठ रे कौन डिफाइन हबो खाली मो डिफाइन करबी void display function होची विदाउट एक्सेस स्पेसिफायर फोर्थ रे कौन डिफाइन करा हबो void display function with parameter एठी पैरामीटर डिफाइन करा फंक्शन जते बेले कोड डिफाइन हबो ना फंक्शन टा क्लास भीतर डिफाइन हो सपोज क्लास हला xyz क्लास भीतर मोर फंक्शन डिफाइन हो इज void show function गोटे फंक्शन show डिफाइन कले गोटे फंक्शन डिफाइन करछि void display function गोटे पैरामीटर नोची int a गोटे फंक्शन नोची void display one एटा आ गोटे फंक्शन है फंक्शन माने को कोठी कॉल करा हबो फंक्शन माने को सपोज मेन मेथड भीतर कॉल करा हबो मेन मेथड हम डायरेक्ट ना दोनी मेन मेथड भीतर फंक्शन माने को कॉल करा हबो फंक्शन कॉल करिवार तरीका कोन ना प्रथमे मु क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेबी तो योर क्लास नेम इज xyz ऑब्जेक्ट नेम इज i एनी नेम यू कैन डिफाइन i खाली मैंडेट नो मु i बदल जे कोनसी ना दे परिबी न्यू xyz एटा हला क्लास रो ऑब्जेक्ट डिफाइन करा एई ऑब्जेक्ट रे मु फंक्शन को कॉल करिबी सपोज i डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करछि जोरा नॉर्मल फंक्शन माने सब i डॉट शो फंक्शन को कॉल करछि i डॉट
show function ମୁଁ ଏଇଟା କଲେ ଏଇଟା ହଉଛି function calling ହେଲା ଏଇ void show function ଟା ଏଠି call କରାହେଲା I ମାନେ object dot means call କାହାକୁ call କଲି show function କୁ call କଲି ତାପରେ ସେ object through ରେ ମୁଁ କାହାକୁ call କରିବି ପୁଣି display function କୁ call କରିବି display function କୁ ଯେତେବେଳେ call କରୁଛି ଏଠି ମୋର parameter ଅଛି କଣ parameter ଅଛି ନା integer parameter ଅଛି କାରଣ ମୁଁ ଏଠି value pass କରିବି 10 ତମେ ଯେ କୌଣସି integer value ଦେଇ ପାରିବ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ string value ନଉଛି string na ଯଦି value ନେଲି ତାହେଲେ I dot I dot display 1 एटे मो string value नेली कोन suppose hello सब स्टेटमेंट जेतले एंड होची सब जगह रे हमें सेमीकोलन पास करियो एटा होची क्लास भीतर फंक्शन डिफाइन हला ओटा होची नॉर्मल फंक्शन आ गोटे हला पैरामीटराइज फंक्शन जेतबे हम इंटीजर पास करूचे int ए रहिला स्ट्रिंग पास करले स्ट्रिंग na रहला जेतबे नॉर्मल फंक्शन को कॉल कराबो i.show फंक्शन जेतबे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कराबो जेहेतु एठी इंटीजर वैल्यू अछि मु पास कली 10 आउ जेहेतु मोर एठी स्ट्रिंग वैल्यू अछि मु डबल कोटेशन भीतर हेलो पास करी स्ट्रिंग वैल्यू ले सब डबल कोटेशन भीतर एटा पास करा एटा होछि इज अ वे ऑफ डिफाइनिंग द फंक्शन इन ए क्लास एंड कॉलिंग द फंक्शन फॉर कॉलिंग एनी मेंबर ऑफ ए क्लास first you need to create a object of class class रो ऑब्जेक्ट केमती बनाबो ना xyz I equals to new xyz एटा ऑब्जेक्ट बनाला ए ऑब्जेक्ट थ्रू रे मु फंक्शन मान को सब कॉल कर बुझियला Yes, sir. Yes, sir. yes Yes, sir. okay so in the next class I will show the program of this one method रा program टा मु देखेबे है ना देई जानता मु नेक्स्ट रे मेथड केमती कॉल कराबो देखाबो हैला Sir, last Java class रो PDF आसीनी. लास्ट रो से गोटे पीडीएफ अछि से पीडीएफ स्टार्ट है Yes, sir. मु जोडा देजी तारे भीतर सब देखो हैला एटा होची दीटा Okay, क्लास sir. पीडीएफ Okay, sir. Thank you, sir.